Student C question. The slant height of a frustum of a cone is 4 cm and the perimeter, that is circumference, of its circular ends are 18 cm and 6 cm. Find the curved surface area of the frustum. स्टूडेंट यहाँ एक फ्रस्टम है जिसकी स्लांट हाइट गिवन है जो कि 4 सेंटीमीटर है एंड पेरीमीटर ऑफ देयर एंड यानी सरकमफ्रेंस उसके एंड्स की दे रखी है जो कि 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है. स्टूडेंट हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. स्टूडेंट उसके लिए आपको स्लांट हाइट चाहिए जो कि गिवन है एंड R1 R2 यानी बोथ एंड्स के रेडियस चाहिए. सो रेडियस ना देके यहाँ पर सरकमफ्रेंस दे दी गई है तो हम सरकमफ्रेंस से रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. नाउ दिस इज द फ्रस्टम और इसके रेडियस कितने दे दीजिए R1 एंड R2. दिस इज द स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर. सो लेट R1 बी द रेडियस ऑफ द लोअर एंड and R2 be the radius of upper end of frustum. So circumference of lower end is equal to 18 centimeter. That is pi 2 pi R1 is equal to 18. So 2 से 18 को डिवाइड कराया तो 9 आया. So R1 is equal to 9 upon pi centimeter. And circumference of upper end is equal to 6 centimeter. That is 2 pi R2 is equal to 6. So 2 से आप 6 को डिवाइड कराइए 3 आया. So R2 is equal to 3 by pi centimeter. Now also slant height of frustum L is equal to 4 centimeter. Now curved surface area of frustum is equal to pi L bracket R1 plus R2. यहाँ L और R1 R2 की वैल्यू रखिए that is pi into 4 bracket 9 upon pi plus 6 3 upon pi. Now student यहाँ पर आप LCM लीजिए that will become 12 upon pi. Pi से pi कटा and that is 4 into 12 that is 36. So 48. So the curved surface area of frustum is 48 centimeter square. Now see the next question.